Our next topic is Roman numerals. You know that the Indian and international system of numeration, this is not only the two systems for writing the numbers. There is a oldest system of numeration, that is the Roman system. You have seen the face of a clock. The hours which are written on the face of a clock are denoted by the Roman numerals, and the section also are denoted by the Roman numerals. So let's see. This one, the number 1 is represented by this symbol, 2 represented by this symbol, 3 represented by this symbol, 4. For the 5 we are written the symbol V. If you write I in front of V, means that on the left side of V it is subtracted, so it becomes 4. 6, it is written as the VI. 7, VII. 8, VIII. 9, the 10 symbol is written as X, so the 9 is IX. Then if we have to write down the 20, it is written as XX. 30, XXX. 50, L. So 40 is XL. 60, LX. L stand for 50 plus 10, 60. 70, LXX. 50 plus 10 plus 10. Then afterward 80, LXXX, that is 50 plus 60 plus 70 plus 80. Then C stand for 100, and the for the 90 is XC, means that 100 minus 10 is equal to 90 XC. Then there are the certain rules for writing the Roman numerals. Just listen it properly. If a symbol is repeated, the number represented by them is their sum. इसका मीनिंग है बेटा, अगर आपका एक सिंबल जो है रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स वो नंबर रिप्रेजेंटेड कैसे करेंगे हम, उनको प्लस करके. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सिंबल ऑफ आई मीन्स दैट आई स्टैंड फॉर 1. 1 plus 1 is equal to 2. X stand for 10. 10 plus 10 is equal to 20. Then remember that no Roman numeral is repeated more than thrice. इसका मीनिंग है बेटा, कोई भी रोमन न्यूमरल जो होगा कभी भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते. L, V, L and D are never repeated. हम V, L और D को कभी भी रिपीट नहीं कर सकते. रूल नंबर 2 इज, if a symbol of smaller value is written to the right of the symbol of greater value, the value of resulting numeral is equal to the sum of the symbols. इसका मीनिंग है बेटा, अगर हम किसी स्मॉलर वैल्यू के आगे उसके राइट साइड पे कोई सिंबल लिख देंगे जिसकी ग्रेटर वैल्यू होगी, तो वो किसकी इक्वल होगी, देयर सम की इक्वल होगी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल. VI, V stand for 5. Now the 1, that is I, is equal to 1. 5 plus 1 is equal to 6. See there, V जो है बेटा बड़ा सिंबल है, it represent the 5 and I is a smaller, so we will add these two number.
Same like that XV. X stand for 10, V stand for 5. 10 plus 5 is equal to 15. Okay. Rule number 3. If a symbol of smaller value is written to the left or before of a symbol of greater value, the resulting numeral is equal to difference of the numerals. For example, here is a IV. अब बेटा इसमें जो है I जो है V से स्मॉलर है, वो उसके आगे लिखा गया है, तो हम 5 में से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. आंसर इज 4. सेम लाइक दैट XC. C स्टैंड फॉर 100. X उसके आगे लिखा हुआ है, तो हम 100 में से 10 माइनस कर देंगे. द आंसर इज 90. इट मीन्स द सिंबल टू रिप्रेजेंट द 90 इज इक्वल टू XC in the Roman numeral. Rule number 4. If a smaller numeral is placed between the two larger numeral, it always subtracted from the largest numeral on its right. इसका मतलब है एक जो स्मॉलर न्यूमरल है, अगर हम उसको दो लार्जर न्यूमरल्स के बीच में लिख देंगे तो लार्जर न्यूमरल जो होगा वो उसके राइट साइड पे होगा. इट ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, हम उसको माइनस करेंगे जो उसके राइट साइड पे होगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, सी दैट XIV. X stand for 10. Here 5 minus 1 is equal to 4. 10 plus 4 is equal to 14. MCD. M stand for 100. Sorry, 1000. 1000. D stand for 500. माइनस कर दो बेटा उसमें से 100, 400. So 1000 plus 400 is equal to 1400. So you have to learn this rule. It helps us to write in the Roman numerals. Okay. I hope that you have understand these concept. Do the practice of these questions. Okay. Thank you. Have a nice day.